Okay, so hello everyone. Myself Kunal, and I am your mathematics tutor, and we are actually doing chapter probability. And today's our fourth lecture on probability. So let's start our lecture with first recap the thing कि हमने previous lecture में क्या क्या चीजें cover करी थी. So पहले मैं ये बता देता हूँ कि हमारे पास दो टॉपिक मेनली बचे हुए हैं. जो पहला टॉपिक है वो है जियोमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी एंड जो दूसरा टॉपिक बची हुई है विच इज एक्चुअली बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट. तो ये दो टॉपिक बची हुई है. सो मे बी इन टुडेज और टुमारो क्लास और डे आफ्टर टुमारो क्लास में ये दोनों टॉपिक्स कवर हो जाए विथ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. सो फर्स्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज कि आज जो है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की टफ क्वेश्चंस को देख रहे होते हैं विथ एक्चुअल रियल लाइफ एनालिसिस. ओके. सो देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्चुअली आप इसको बहुत इजीली कनेक्ट कर पाओगे. सो लेट मी राइट इट हियर. अ पर्स कंटेन 4 coins which are either 5 rupees coins or 1 rupees. 2 coins are drawn and found to be uh, 2 coins are drawn and found to be 1 rupees coin, 1 rupees coin, and found to be 1 rupee coin. If those are replaced, what is the chance that another drawing will have a 5 rupees coin? Okay, so there is a conditions ki if those coins are replaced, then what is the chance that another drawing will give a 5 rupees coin, will give a 5 rupees coin. So देखो क्वेश्चन ये है कि लेट अस सपोज कि एक पर्स है एंड उसमें ये पॉकेट है जिसमें कॉइन रखी हुई है. ठीक है. एंड जो पर्सन है जो उस पर्स का ओनर है उसको पता है कि पर्स में 4 कॉइन है. एंड यू ऑल्सो नो दैट कि जो कॉइन्स हैं वो या तो 1 रुपए के हैं या तो 5 रुपए के हैं. एंड वो करता क्या है कि वो 2 कॉइन निकालता है अपने पर्स में से एंड ही फाउंड दैट 1 coin इज अ 1 rupees coin. ठीक है. एंड देन वो क्या करता है कि अगेन उस कॉइन को रिप्लेस कर देता है, उसी पर्स में डाल देता है. then you have to find ki what is the chance that the another drawing will be a 5 rupees coin. Okay, so this thing you will have to find. So my suggestion is to pause the video and try to find it by own. Okay, so that it will be clear to you. I'm just telling you the all procedure. So wait a minute. Okay, so let's try to solve by starting the things. So let's make it here the diagram, right, which we will make in each and every conditional statement, and then we will try to find. So let's start it from here. So there is the first case कि या तो जो 4 कॉइन हो वो पूरी 5 रुपीज का ही कॉइन हो एंड 0 कॉइन हो 1 रुपए का. दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं कि 3 5 रुपए का कॉइन हो और 1 कॉइन 1 रुपए का हो. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी देखो उसको पता है कि या तो 5 रुपए का कॉइन है या तो 1 रुपए का कॉइन है, बट ही डिडंट श्योर कि क्या 1 रुपए का कॉइन सच में है. ये थोड़ी सी लॉजिकल क्वेश्चन है. लेट मी टेल यू अगेन कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा. सो आई एम गोना टेल यू कि जैसे मैंने पर्स में कुछ कॉइन्स रखे हैं, मेरे को पता है कि 4 कॉइन्स हैं एंड मैं श्योर नहीं हूं कि सच में कॉइन्स मैंने रखे हैं या नहीं रखे हैं. ओके. ठीक है. तो आई एम नॉट श्योर कि क्या सच में मैंने कॉइन्स रखे हैं या नहीं रखे हैं. सो व्हाट आई एम गोना डू हियर इज कि वी आर
नॉट श्योर, सो हम एक 4 केस बनाएंगे कि या तो चारों कॉइन 5 रुपए का हो, या तो 3 कॉइन 5 रुपए का हो, या तो 2 कॉइन 5 रुपए का हो, या तो 1 कॉइन 5 रुपए का हो, या तो एक भी कॉइन 5 रुपए का ना हो, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जीरो मतलब 1 रुपए वाले पे भी कंडीशन फिट करी जाएगी। सो लेट मी राइट इट हियर। फिर या तो 2 कॉइन हो 5 रुपए के, और 3 कॉइन हो 1 रुपए के, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं ना कि बेसिकली 1 कॉइन हो 5 रुपए का, और 4 कॉइन हो 1 रुपए का। सॉरी 3 कॉइन है ना, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3। और फिर क्या हो सकता है, द लास्ट वन इज की एक भी जी 5 रुपए की कॉइन ना हो, और 5 हो 1 रुपए का coin। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी। नाउ द थिंग्स इज कि अब हमें जानी का है, अब हमें जो सेकेंड इवेंट जो मेरे पास हो रहा, वो ऐसा हो रहा कि मेरे पास जो फाइनली जी कॉइन आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 5 रुपए की कॉइन। ठीक है, सो लेट मी राइट इट हियर फर्स्ट, मेक इट द डायग्राम, देन वी विल राइट द प्रोबेबिलिटी। सो चाहे यहाँ से आए, या यहाँ से आए, या यहाँ से आए, या फिर इस केस के थ्रू आए, या फिर इस केस के थ्रू आए, वी हैव टू गेट दी 5 रुपीज कॉइन। ओके, so what I'm gonna do here is कि look at here, अगर यहाँ पे कोई भी बेसिकली 1 रुपए का कॉइन है ही नहीं, सो इन फर्स्ट केस, जो फर्स्ट केस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो अब यहाँ पे तो मैं सब में ये जो प्रोबेबिलिटी ये सबकी सेम है, क्योंकि यहाँ पे सब में एक ही आ रहा ना, एक 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 एक। एंड यहाँ पे एक और मिडिल केस भी बन रहा, जिस केस में ये पता चल रहा था कि ये है एक्चुअली रिप्लेसिंग पेज, जब हम क्वाइन को रिप्लेस कर रहे होते हैं, है ना। जब क्वाइन को रिप्लेस कर रहे होते हैं तो वो भी एक फेज है ना। तो व्हाट आई एम गोना टेल यू इज कि अ, जो थिंग्स हैं वो कुछ ऐसी हैं कि फर्स्ट केस में जो मेरे जब मैंने कॉइन निकाला था, तो मेरे पास दो 1 रुपए का कॉइन आए थे, है ना। तो अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि यहाँ पे अगर 0 1 रुपए का कॉइन है, सो रिप्लेस कर ही नहीं सकते, इट्स नॉट सेटिस्फाई अवर कंडीशंस। So here, in via this way, the probability will be 0. And in this way also, because there is 2 coins. क्योंकि यहाँ पर if you read the question, 2 coins are drawn and found to be 1 rupees coin, है ना। 2 कॉइन ड्रॉन किया गया था एंड फाउंड टू बी कि वो 1 रुपए का कॉइन था दोनों। तो अगर मैं ये केस लेता हूँ कि मेरे पर्स में, अगर मैं ये केस लेता हूँ कि मेरे पर्स में 3 5 रुपए का कॉइन है और एक 1 रुपए का कॉइन है, ये मैं कंडीशन ले रहा हूँ, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मेरे पास क्या दी हुई है कि मेरे पास 4 कॉइन्स हैं, एंड व्हेन वी ड्रॉ 2 कॉइन्स फ्रॉम द पर्स वी गेट 1। ठीक है, एक एक रुपए के 2 सिक्के मिलते हैं। सो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि एक सिक्का तो हो ही नहीं सकता ना एक का। ये हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो लुक एट हियर। जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि बेसिकली कि 1 रुपए आ जाए, है ना। तो इट विल बी लाइक दो 1 रुपए के सिक्के हैं, है ना। सो इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी समथिंग लाइक, टोटल कितने केसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 4 एंड 2 6, सो इट विल बी लाइक 1/6। हियर विल बी 3/6, एंड हियर विल बी लाइक, यहाँ पे तो 5 रुपए का कॉइन है ही नहीं ना। तो अगर 5 रुपए के कॉइन मेरे पास है ही नहीं, सारे मेरे पास 1 रुपए के कॉइन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। इट्स अ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्यों है, देखो अगर यहाँ पे जैसे एक मेरे पास बकेट है, यहाँ पे 6 रेड बॉल है और कोई कलर की बॉल है ही नहीं, एंड आई एम आस्किंग यू कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन आई ड्रॉ अ बॉल, सो द बॉल इज विल बी अ रेड कलर बॉल। तो ये क्या हुआ, ये तो रेड बॉल ही है, और तो कोई इवेंट है ही नहीं ना, मतलब और कोई कलर की बॉल है ही नहीं। जब और कोई कलर की बॉल है ही नहीं, तो ये तो जो भी काम बोल रही हो तो श्योर इवेंट है। एंड वी ऑलरेडी नो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज एक्चुअली 1, right? So its probability will be 1. Now the next thing is something like we have to take that कि जो second probability चाहिए
वो कितनी आनी चाहिए, वो आनी चाहिए मेरे पास 5 रुपीज कॉइन की प्रोबेबिलिटी मिलने वाली है। सो यहाँ पे क्या है, बेसिकली वन विन ड्रॉ। ओके, सो लेट मी राइट इट हियर। सो हियर विल बी लाइक सेकंड कॉइन क्या होनी चाहिए कि मेरे पास 5 रुपए की होनी चाहिए। सो देयर विल बी लाइक वन विन ड्रॉ। लेट मी राइट इट हियर, वन विन ड्रॉ। Okay, so here will we get like when actually when you calculate the probability, so here we get 0, 0, and here will we get like 1/6 divided by 1/6 plus 1/2 plus 1, because we have to add the whole. This will be equal to 1/2, right? So it will be equal to 1/10, and when you do this, so it will be 1/2 plus 1/6 plus 1/2 plus 1, same as Bayes theorem, right? So it will be equal to 3 by 10, and it is 1. So it will be like 1 plus 1/6 plus 1/2 plus 1. So it will be equal to 3 by 5. Now, we have to take the via each case. So let me make the second phase. It's actually a part-wise question. Okay, so you have to take it stepwise. कि कैसे कैसे क्या क्या हो रही है. So here will be 1, and via this way देखो मेरे पास 3 कॉइन है 5 रुपए की, है ना. यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी कॉइन है, 3 कॉइन है. So it will be like 3C1 डिवाइडेड बाई 4C1, है ना, क्योंकि 4 कॉइन में से मेरे को एक कॉइन लेना है. मैंने सिलेक्शन रूल लगा दिया बेसिकली. फिर यहाँ पे 2 कॉइन में से मेरे को एक कॉइन लेना है, एंड टोटल 4 कॉइन में से, एंड देन एक कॉइन लेना है. यहाँ पे तो ले ही नहीं सकते, तो 1C1 by 4C1, here will be 0. So our required probability is actually is equal to 1/10 into, we are actually taking this case as well. ठीक है, क्योंकि देखो ये दोनों से तो 0 आ जाएगा ना, एंड वी हैव टू गेट द फाइनल प्रोबेबिलिटी. तो हमें पता है कि फाइनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं. सारे वेज का सम, वेज 1 प्लस वेज 2 प्लस वेज 3 प्लस वेज 4. तो यहाँ पे 4 वेज है ना, इसका इसका तो 0 है, सॉरी 5 वेज है, बट 2 वेज का 0 है. सो दिस एंड दिस गॉन 0. So we have to take the remaining of third. So what we'll get, 1/10 into 2C1 into 4C1. So it will be 2/4. Then plus there will be 1/2 into 1/2 into 1/4 into 3/10 is equal to 5/40. So it will be equal to 1/8. This is our final answer. Okay. So you have to keep this thing in mind, and this is actually the real best problem. इसको ऐसा कर सकते हो कि first problem for fair related. You can say in this way. Okay. Now let's take the another question, which based on actually way to home या फिर way to office. Okay. So the question is कि there is a person goes to office either by a car, scooter, bus or train. Probability of which being is 1/7, 3/7, and 2/7 and 1/7. 2/7 and 1/7 respectively. Probability that he reach office late. Let me write it here. Probability that he reach office late if he takes car, scooter, bus or train is 2/9, 1/9, 4/9, and 1/9. 2/9, 2/9, 1/9. Let me erase it and write it in a clear way. 2/9, 1/9, 4/9, and 1/9 respectively. Okay. So given that if he reached the office on time, what is the probability that he traveled by car? So there is a question, if he reached office in time, so what is the
what is the probability that he traveled by a car? ओके, सो आपकी इसकी इसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है कि वो कार सही है। अब देखो, एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन फिर से एक्चुअली रियल लाइफ पे बेस्ड है, सो आई एम गोना टेल यू a simple ways here so you can understand it. Okay, so look at here, there is something called uh, starting way or anything we can say. So देखो यहाँ पे एक्चुअली केस ऐसा है कि एक आदमी है जो सुबह ऑफिस जाता है, ठीक है। तो या तो वो आदमी अपने ऑफिस कार से जा सकता है, या तो स्कूटर से जा सकता है, या स्कूटी वट एवर बाइक, या तो बस से जा सकता है, या तो ट्रेन से जा सकता है, ठीक है। तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि अगर वो कार से जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, बस से जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है ना, और ट्रेन से जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब चार चीजें याद देखो, चार, देर इज फोर व्हीकल विच ही कैन रीच टू ऑफिस फ्रॉम हिज होम। फर्स्ट इज कार, या तो वो कार ड्राइव करके ऑफिस जाए, या तो वो स्कूटी से जाए, या तो वो बस से, मतलब जो गवर्नमेंट बस होती है, या वट एवर गवर्नमेंट और प्राइवेट बस से ले, या फिर वो मेट्रो या ट्रेन से जाए ऑफिस, है ना। तो प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि वो कौन सा व्हीकल यूज करने की उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो कार यूज करने का 1/7 है, स्कूटर यूज करने का 3/7 है, एंड बस यूज करने का 2/7 है, एंड ट्रेन यूज करने का 1/7 है। Okay, so these are the probability given actually, है ना। And now there is a question, there is actually another condition given कि probability that he reached office late if we take that scooter, if we take the vehicle, whatever it's car, scooter, bus or train is। अब लेट होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि अगर कौन से व्हीकल को वो, जैसे ऐसा होता है ना, नॉर्मल समझो, अगर तुम बस से जा रहे हो, ठीक है, एक, लाइक ऐसा समझते हैं, लेट्स टेक दी अर्ली मॉर्निंग टाइम की लेते हैं, ऑफिस आवर, ठीक है। तो इन जनरल 9 AM पे स्टार्ट होता है ना। तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि 8 AM से अगर ए से बी पॉइंट पे जाना है, और आई एम जस्ट कंसिडरिंग हियर अ वन पर्सन, बट लेट अस टेक इट एज अ क्राउड, है ना। तो आपके पास 4 वेज हैं। फर्स्ट वे है कि आप कार से जाओ, दूसरा वे है कि आप स्कूटर से जाओ या स्कूटी से जाओ, थर्ड वे है कि आप बस लो, और फोर्थ वे है कि आप ट्रेन से जाओ, मतलब मेट्रो से जाओ या ट्रेन से जाओ वट एवर, या फिर ट्राम से जाओ। ओके, तो हेयर इज द केस कि देखो, अब इन चारों में से सबसे पहले तो इस आदमी को सेलेक्ट करना है कि मैं किस चीज से जाऊंगा, और इस आदमी को एक्चुअली टाइम पे पहुंचना है। इस जो जो पर्सन है उसको क्या है कि टाइम पे पहुंचना है। तो अब यहाँ पे लेट होने की प्रोबेबिलिटी भी क्वेश्चन में गिवन है कि अगर वो किस वे को, किस वे से अगर जाता है तो उसको कितने देरी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो बस से जा रहा है तो उसकी लेट होने के चांसेस बहुत हाई हैं, विच एक्चुअली प्रॉब्लम में दिख रहा है कि इफ वी टेक द बस, हिज उसकी लेट होने की प्रोबेबिलिटी 4/9 है। बट इफ यू टेक द स्कूटी, लाइक देखो, अगर तुम बाइक से जा रहे हो तो यू कैन इजिली बाईपास द जो भी क्या उसको बोलते हैं, ट्रैफिक होता है ना, उसको तुम इजिली बाईपास कर सकते हो अगर स्कूटर या स्कूटी या फिर साइकिल से हो। बट इट इज रियली टफ टू बाईपास द ट्रैफिक बाया बस, क्योंकि बस एक बड़ी गाड़ी होती है जिसको, मतलब ट्रैफिक में वो इजिली बाईपास नहीं कर पाता। दैट्स वाई उसके जो लेट होने की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है, ठीक है। सो लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन एंड वी हैव टू स्टार्ट मेकिंग द डायग्राम। सो फर्स्ट थिंग, उस पर्सन को क्या करना है, फर्स्ट स्टेज पे क्या डिसाइड करनी है उसको। फर्स्ट स्टेज पे उसको डिसाइड करना है कि वो कौन सा व्हीकल ले रहा हो। आइदर ही कैन चूज अ कार और स्कूटर और बस और ट्रेन और मेट्रो, वट एवर इट इज। ओके, सो लेट्स राइट इट हियर कि फर्स्ट स्टेज पे क्या हो रही है, सिलेक्शन ऑफ व्हीकल, है ना। सिलेक्शन ऑफ क्या हो रहा,
vehicle. Okay, and so here we can write it as a car, bus, and all. So let me write it here. Either it is a car, scooty, or bike, whatever. Next is a bus, and the next one is metro or train. But we have to reach to a final conclusion at second stage that a person reached on time. लेट नहीं होना चाहिए, है ना? तो कार लेने की क्या पॉसिबिलिटी है? 1/7, है ना, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है. So it will be 1/7, next will be 3/7, 2/7, 1/7. 3/7, 1/7 and 2/7. लेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? लेट होने की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 2/9, 1/9, 4/9 and 1/9. 2/9. Okay. 2/9, 1/9, 4/9, 1/9. And you have to find that what is the probability that he traveled by car. Acha. He reached on time and he traveled by car. Reached on time. देखो, ये मेरे पास है एक्चुअली गिवन इवेंट और ये है मेरे पास टारगेट इवेंट. ठीक है, तो जो टारगेट इवेंट है ना वही मेरे पास प्रायर स्टेज में है. देख रहे हो? एंड गिवन इवेंट जो है ना कि ही रीच्ड ऑन टाइम, यो ये एक्चुअली इवेंट है. ये जो है ना ये है लेटर. सो ये किसका केस है बताओ? इट्स इन क्लियर केस ऑफ बेस थ्योरम, है ना? सो वी हैव टू अप्लाई द बेस हियर. सो लेट मी राइट इट हियर. Just apply the Bayes theorem. Applying Bayes theorem. So actually, what did we get if we apply the Bayes theorem? So if we apply the Bayes theorem, we have to get that. So we have to take that way. So 1/7 into 2/9 divided by, we have to add the always. So like 1/7 into 2/9 plus 3/7 into 1/9 plus 3/7 into 1/9 plus 1/7 into 4/9 plus 2/7 into 1/9. So when you solve this, so what we will get? It's like what? 2/63, right? And in denominator, all will be made as a 63. So let's make it and add the whole. So 2 plus 3 plus 4 plus 2. So it will be something like 2/11. Okay, so this is the actually probability that it traveled by car. Oh, I think I do some mistake here. Oh, it's a blunder. Okay, wait. We actually, this is the probability that he got late. And this is the probability that he got late. So we have to take the probability that he reached on time. So we have to do, okay, there is a blunder mistake I did. So there will be like 1 minus 2/9, 1 minus 1/9, 1 minus 4/9. So he reached on time. This is actually the probability of being late. But we have to find the probability that he reached on time. So it will be 7/9. This will be 8/9. This will be 5/9. This will be 8/9. So I did small mistake here. And sorry for that. So let me solve it. Okay, so here will be like 7/9. Here we'll just remove this part. So we can easily write it here. Because here in question actually given is probability that he reached office late, but we have to find that he reached the office on time. Okay, so that will be 1 minus. मतलब लेट पहुंचने का और टाइम पे पहुंचने की ऐड करोगे ना प्रोबेबिलिटी, सो इट विल बी सम्ड एज 1. Okay, so it will be simple. So when you do so, what you will get here will be 7/9, 8/9, 5/9 and 7/9. Sorry, 8/9. So just कुछ करना नहीं था, बस इसको ऐड करनी थी. So let me write it here. Okay, let me erase this thing. So I think you did one more mistake here, which tried as we have to remove this part as well, because in this place we have to write actually 7/9, right? This part. So 7/9. So it will be 7/63. And there will be like 7 plus 24
plus 5 plus 16. So when you solve this, what you will get? 16 and 24 will be 40, and 40 plus 5 will be 45, and plus 7 will be 52. So this will be called as our final answer. Okay. So, okay. Now let's move on to the a concept which is actually important. So let me write it here. There is a concept called an important logic. So you have to develop it, or maybe you have to try to remember it as well. So it won't appear. Let me write it here. And important and important logic. What is the logic is actually if there is an whole number are taken at random and are multiplied together. So you have to find that the chances that the digit at their unit place of their product is क्या क्या होगी. Okay. So let me write it here so you can understand it. So the things is कि क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे समझो ऐसा, इफ आई एम गोना टेल यू कि मैंने ये एक होल नंबर का सेट है जो मैं एक्चुअली डिफाइन कर रहा हूँ समथिंग लाइक 0 1 2 3 4 22 21 29 99 ओके 100. ओके सो मैं ये 10 नंबर का सेट को डिफाइन करा है मैंने. 10 नंबर है एंड मैं इसमें से बोल रहा हूँ कि अगर मैं इन पांचों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर फॉर्म होगा उसकी लास्ट डिजिट कुछ एक्स होगी. अब वो एक्स क्या होगा, या तो 0 से लेके 9 के बीच में होगी. तो उसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है. आपको पहले कैसे समझ में आया नहीं आया? व्हाट आई एम सेइंग इज कि एन होल नंबर लेते हैं एंड उसमें से एक सबसेट का उसकी सबसेट लेते हैं कोई भी एंड उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर पूरे होल नंबर को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं. एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जब प्रोडक्ट हमने लिया तो उसकी जो लास्ट डिजिट आया वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, या 7 होगा, या 8 होगा, या फिर 9 होगा. सो दीज थिंग यू हैव टू फाइंड. ओके सो व्हाट आई एम गोना डू हियर इज कि we have to do one thing here, and actually I'm going to prove it in next class because in that something binomial experiment were used. So I'm going to prove it in next class, but right now I'm going to write the formula. So because so you can develop a very good logic in it. So let me write here first the x definitions or whatever it's called as. So I'm going to write here key n whole number is taken at random and are multiplied together So actually prove that the chances that the digit at their unit place, so you have to so that the digit at their so that the digit at their unit place to show that their chances of digit at unit place of their product are as. ठीक है, तो आपको बतानी है. तो देयर इज सर्टेन लाइक पहला ऐसा है कि अगर 1 3 5 7 आई थिंक 5 नहीं, लेट मी रेज इट 1 3 7 9 ओनली. ओके तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आती है वो आती है 2/5 टू द पावर है. I'm gonna prove it in next class, बट क्योंकि इस पे एक प्रॉब्लम आने वाली है, सो I'm gonna wants to tell you that. ओके सो 1379. अगर यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि अगर मैंने एक होल नंबर का सेट लिया एंड उसके सबसेट को हमने मल्टीप्लाई करी, ठीक है, एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इफ वी गॉट द प्रोडक्ट की जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आई
वो या तो 1 हो या तो 3 हो या तो 7 हो या तो 9 हो. So it will be actually counted as the probability is equal to 2 by 5 to the power n. Now, next thing we have to take for same for the even number. But notice one thing here, if we write it as an odd number, but we didn't take the 5 because 0 and 5 are some special cases. So we will deal with it also. So the next case will be like 2, 4, 6, 8. But here we also not included the 0 because 0 is also the even number. So its probability is 4 to the power n minus 2 to the power n by 5 to the power n. Okay. And now next third case, which are actually both were special cases. What if the unit digit of the product is 5 and what if the unit digit of product is 0? So for 5, it's actually is equal to 5 to the power n minus 4 to the power n by 10 to the power n. So let me write it here. 5 to the power n minus 4 to the power n by 10 to the power n. And what for 0? So for 0, it will be like 10 to the power n minus 5 to the power n, actually 8 to the power n. Okay, let me erase it. Don't worry, I'm going to prove it this in next class, so you don't have to worry about that. 8 to the power n minus 5 to the power n plus 4 to the power and divided by 10 to the power n. So these are some special things that you have to keep in mind. Because देखो ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, so मैं अभी एक दो प्रैक्टिस करवाता हूँ, so you can understand it. So I'm giving you a 5 number. Okay, I'm giving you some 5 number, and you have to find that if I take the product of those 5 number, so what is the probability that that the product unit digit will be 1, 3, and 7 and 9. Okay, so let me write it here question. So the question is if I take the 5 whole number, I don't know what it is. So first thing you have to find is uh, what the probability that the product is 1379. So let me take as example, like if I take the one whole number, like it is 5, which is n is equal to 1. Or maybe you can take any times of number and you have to take the product as like if I take 0 and 5 and I take the product of these two, so you can do this. Okay. Now, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ so I can remember that I have to prove this, prove of these all will be discussed in next class. Okay. So, I think हमने वो उस प्रॉब्लम में हमने करी थी कि लाइक लाई डिटेक्टर पे आई थिंक प्रॉब्लम हो गया है. ओके, सो लेट्स टेक सम न्यू काइंड ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम. Okay, so let's take the random walk problem. Actually, it is very important. Random walk. I hope you all saw some drunken kind of person, and you also notice their steps as well, like how they walk, right? Everyone uh, in their life, anywhere you can saw some drunken kind of person, and you also notice their walks, right? So how they walks, they actually they didn't have control on their body, so they do random walk. Okay, so what they do random walk. So let me write here the question, random walk problem. So the problem is a drunk basically a drunken person. Let me write it. uh, a drunkard takes a step forward or backward. ठीक है, या तो वो आगे आता है या तो पीछे आता है. The probability that he takes a step forward is 0.4. Find the probability
find the probability that at the end of 11th step, he is just one step away from the starting. Okay, so actually this is the question. So there is a drunken person जो कि actually drunk है and वो बस आगे जा सकता है या तो पीछे जा सकता है, ठीक है. एंड द पर्सन थाउट, और यहाँ पे दी हुई है कि आगे जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.4. ठीक है, जो आगे जाने की जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है ना वो एक्चुअली दी हुई है 0.4. एंड यू हैव टू फाइंड कि इफ इट आउट कि उसने 11 स्टेप चले हैं, ठीक है, इफ इट आउट कि उसने 11 स्टेप चले हैं, सो सो यू हैव टू फाइंड दैट कि वो बस एक स्टेप अपने इनिशियल पोजीशन से अवे हो. ओके, सो यू हैव टू फाइंड दिस. सो लेट्स टेक इट हियर. देखो अब लेट अस सपोज कि यहाँ पे उसका वो इनिशियल मार्क है. लेट मी मेक इट. दिस इज एक्चुअली इट्स इनिशियल मार्क. अब देखो द क्वेश्चन इज कि ही जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट. सो आइदर ही इज फॉरवर्ड और ही इज बैक. या तो वो एक कदम अपने इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल मार्क से आगे होगा, या फिर एक कदम अपने इनिशियल मार्क के पीछे होगा. सो एक्चुअली नोटिस द क्वेश्चन व्हाट आई एम गोना टेल यू. या तो वो अपने इनिशियल मार्क से एक कदम आगे होगा, एक कदम पीछे होगा. सो इट विल बी लाइक एक कदम आगे वाली केस लेते हैं, मतलब फर्स्ट केस लेते हैं. इसको कहते हैं 1, इसको कहते हैं 2. तो 1 कैसे हो सकता है? या तो वो 6 फ्रंट जाए और 5 बैक जाए, और दूसरा क्या हो सकता है कि वो 5 फ्रंट जाए और 6 बैक जाए. वो एक से पीछे रहेगा और इसमें एक स्टेप आगे रहेगा. तो द कंडीशन इज 11 से 6, 0.4 टू द पावर 6, बिकॉज आगे जाने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है. नेक्स्ट विल बी 0 पॉइंट, तो पीछे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 माइनस 0.4. इट विल बी इजी, राइट? 11 से 5, 0.4 टू द पावर 5 एंड 0.6 टू द पावर 6. So when you solve this, you will get 11c6, 0.24 to the power 5. Final answer. Okay, so you have to keep these thing in mind. Okay. Okay, so that's all for today. In tomorrow's lecture, we are going to discuss binomial experiments and all. Thank you.